मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। पोलैरिटी प्रोड्यूस होने की वजह क्या है कि जब दो डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है या दो एक डबल बॉन्ड या लोन पेयर इसमें कॉन्जुगेशन है तब उसमें इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन की वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। दिस मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज polarity produced in a molecule due to interaction between either two double bonds or one double bond and lone pair of electrons. Simply, it is the interaction between either two double bonds, जैसे कि a double bond है और एक डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, इसमें इंटरेक्शन होने की वजह से इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। और इंटरेक्शन कब होता है? जब इसमें कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मतलब ए लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड दे सेपरेटेड बाय वन सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों में एक सिग्मा बॉन्ड उनको सेपरेट कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सिमिलरली हियर दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब दिस मॉलिक्यूल also conjugated। तो इसमें अभी पोलैरिटी कैसी प्रोड्यूस होती है हम देखेंगे। This is the double-headed arrow which shows that is a delocalization of pi electron, that is nothing but the resonance. Mesomeric effect is a type of a resonance effect. It is again called as a resonance effect. Now this lone pair of electron, the nitrogen having the lone pair of electron, that lone pair of electron will interact with this double bond and this lone pair of electron shifted here towards the carbon and it formed the pi bond, and that pi electrons are shifted towards the next carbon so as to that carbon will acquires the negative charge due to complete transfer of that pi electron and this CH double bond NH2, और ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए तो नाइट्रोजन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ना। अभी इसमें देखो ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव, मतलब इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी बन रही है। दिस इज नथिंग बट द पोलैरिटी। पोलैरिटी जनरेट हो रही है, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है? इंटरेक्शन बिटवीन टू वन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर दिस पोलैरिटी अगेन polarity produced by the interaction between two double bonds. Now if you observe these two double bonds, this double bond that is carbon and oxygen, this double bond is polar bond. Always electrons are shifted or transferred towards the more polar bond, that is that pi electrons are shifted towards the oxygen. Then this carbon becomes electron deficient. In order to stabilize here, these electrons are interacted to that carbon, means that pi electrons are shifted here. Then formation of here CH2, this CH, then this C, this is the O minus and this is the H. Now this oxygen carries negative charge due to transfer of pi electron towards itself and due to loss of electron. Now ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे बन रही है डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या मॉलिक्यूल में टोटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मतलब क्या है? पोलैरिटी। ओके, तो ये पोलैरिटी होने के लिए उसमें कॉन्जुगेशन चाहिए। किसमें कॉन्जुगेशन? एक तो दो डबल बॉन्ड में या एक डबल बॉन्ड लोन पे, इसकी वजह से पोलैरिटी बनती है। एंड सिंपली दिस इफेक्ट इज डिफाइंड एज पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरेक्शन। ये क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन आइदर टू डबल बॉन्ड्स और वन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो एग्जांपल है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप्स है। First one is known as positive mesomeric effect and second one is known as a negative mesomeric effect. Positive mesomeric effect is also known as plus M effect and negative mesomeric effect is also known as minus M effect. Positive mesomeric effect is that effect in which atoms or group of atoms donate electron towards carbon through pi bond. Pi bond through ये क्या कर रहा है? Electrons are donated towards carbon is known as plus M group and the effect is known as plus M effect. जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिसको डायरेक्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है,
like NH2OH, NHCOCH3, such atoms or groups which donate electron towards carbon, and such effect is known as plasm effect. Second one, the negative mesomeric effect, in which the atoms or group of atoms which withdraws electrons away from carbon, carbon से दूर जा रहे electrons, okay, that groups or atoms are known as a minus M group, and the effect is known as a minus M effect. Okay, pi bond, this effect operates through, that is the pi bond. इफेक्ट होने के लिए पाई बॉन्ड होना ही चाहिए, और दिस इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. जितना इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पे होगा कॉन्जुगेशन में, सपोज देयर आर 100 नंबर ऑफ कार्बन्स आर देयर in conjugation, then the effect on first carbon and on the 100 carbon is the same. मतलब this mesomeric effect is a distance independent. कितना भी डिस्टेंस हो जाए इफेक्ट है सेम रहेगा, सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, conjugation. In this way we have understand the mesomeric effect.